Morning. Today I will tell you about electric force between two charges. About it, the Coulomb says that when two charges Q1 and Q2 put at a distance r, then electric force between them, like this one, it applies to this one and it applies this one, will be F. See? Is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. It is written, you can write it here, the electric force between the point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. Now, let two charges Q1 and Q2 put apart at a distance r from each other, then electric force is F, then F is directly proportional to Q1 Q2 upon r square. It means, as it is said that Q1 Q2 is in the numerator, therefore directly proportional, and r square is inverse in the numerator and denominator. So r square is in denominator, therefore it means it is the inversely proportional. Clear? And when two physical quantity are in proportionality, then for equating we put a constant. For example, you can say easily understand about the constant. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बॉटल दे दी जाए, उसका ढक्कन दिया जाए, ढक्कन अगर उसका हम कस रहे हैं, लूज हो रहा है, now what will you do? You put a paper or any other thing, then you can, it will be tight. Then your paper becomes will be as a constant. Similarly, in this case, since this is the proportionality, for equating we take a constant known as 1 upon 4 pi epsilon naught, where 1 upon 4 pi epsilon naught is known as proportionality constant, and its value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square, where epsilon naught is known as permittivity of free space. Permittivity of free space, you can understand like this one. Permittivity in Hindi, if you can understand like simply, जैसे आप लोग कहते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में कि उसके पास सहनशीलता बहुत है, उसके पास वीरता बहुत, तो जैसे सहनशीलता, धैर्यशीलता, सिमिलरली ये होती है वैद्युतशीलता, द कैपेबिलिटी to flow the charge or to attract the force at different things about electricity is called as permittivity of the medium. अभी इसके जस्ट आगे बताएंगे आपको. यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट वर्ड यूज किया जाता है वो केवल फ्री स्पेस की परमिटिविटी के लिए यूज करते हैं, ये ध्यान रखने. और इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसी से आप निकाल सकते हैं, दिस वन. इस रिलेशन से एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाके इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं 8.85 into 10 to the power जो वैल्यू आएगी तो उसको निकालना है, उसकी जरूरत है हमें. न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व करने. हाँ, आपको जानकारी के बताया, आपके टेक्स्ट बुक में इट इज आल्सो कैन बी रिटन एज लाइक दिस वन. इट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट k q1 q2 upon r square, where k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, के से भी डिनोट किया गया. क्लियर? लेकिन वैल्यू के की वही आएगी. ठीक ना? इफ सपोज दैट देयर इज नो फ्री मीडियम इन एनी मीडियम, देन इट विल बी, इसको जस्ट अभी आगे बताएंगे. सबसे पहले इसका बताते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. In vector form. To understand this one, we put the charge Q1 here and Q2 here. Clear? Now the distance between them is r, like this one.
But if you measure in the vector form, then here we can write here vector r1 2. It means the distance from this point to this point. If you measure from this point to this point, therefore we can say that r2 1. इसका मतलब ये हुआ 2 to 1 मेजर कर रहे हैं. Similarly, अब the force on Q1 is applied by Q2. In which direction? If repulsive force, then in this direction, and it can be written as F on 1 by 2. Clear? Similarly, at this point, F2 1, it means force on 2 exerted by 1. Or also you remember always F1 2. Yeah, F1 2. So we can say that force on Q1 due to Q2. Clear? And R1 2, the displacement from Q1 to Q2. Clear? And again, F21 means force on Q2 due to Q1, and R21 means the displacement from Q2 to Q1. But formula will be remain same. For example, in vector form it can be written as F12. It can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square in unit vector R21. Why? Because F12 means force on 1 exerted by 2. So force exerted by 2, therefore you have to measure the distance from point 2 to 1. Therefore we take the R21, and this notation you have to study in the first year class. It is known as the unit vector. Therefore we can say that R21 unit vector means R21 vector upon mod of R. Therefore, if you write in the vector form with this value here, then you can say that F12 can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R cube into vector R21, like this one. Also, similarly, if you calculate the F, it is your F12, and force on Q1 due to Q2. Now we want to calculate the force on charge 2 due to Q1. Therefore it can be written as F21. It can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square unit vector R12. Why? Because force on 2 by 1 you can measure from, then distance you have to measure from this point 1 to 2. Therefore we write here the R12. Similarly, since it is a unit vector, from this one in the vector form it can be written as F21 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R cube into R12 vector. Clear? Now this is the equation 1 and it is your equation 2. Now what the relation between, so in this way you have to write the importance of the vector form. The importance of vector form में फर्स्ट पॉइंट इसके लिए आपको नोट करना चाहिए.
द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, vector form. In this way, first one is known as, according to this one, we know that R1, what the relation between R12 and R21? What is the relation? Since R12, the displacement from 1 to 2, and R21 is displacement from 2 to 1, but magnitude are both the same. Therefore, we can say that R12 equal to minus of R21. Can see here. Clear? Therefore, we can say that from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, we can say that F12 will be equal and opposite force on 2 by 1. It means we can say that also you have to study this law. Where? Remember one thing, in your first year you have to the Newton's law of motion. And what is the third law of motion? Equal and opposite force. Similarly, you can say here, when force on 1 applied by 2, similarly same force applied on 2 by 1. But direction will be the just opposite, therefore will be negative. Therefore, we can say that Coulomb's law is also follows the Newton's third law of motion. Clear? In this way, this is the importance of the vector form. Otherwise, एक याद रखना है, न्यूमेरिकल लगाते समय कहीं पर भी हम इसका यूज नहीं करेंगे. न्यूमेरिकल में केवल आपको वही यूज करना है जो इससे पहले बताया गया था. क्लियर? अब देखिए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होते हैं और कैसे हम यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं. तो इसके लिए हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं. उनमें देखिए पहले थर्ड न्यूमेरिकल, कितने मिनट हुए? 12 हो गए. तो हाँ, तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन. न्यूमेरिकल्स. नाउ थर्ड वन, देयर आर, तो सबसे पहले तो उसमें क्या गिवन है? देयर आर 2 प्रोटॉन्स आर गिवन. तो उसमें क्या लिखे हैं? द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ आइदर. किसी एक के वेट के इक्वल. तो अगर 2 प्रोटॉन ले रहे हैं, मान लीजिए एक प्रोटॉन यहां पर है, प्रोटॉन, और दूसरा प्रोटॉन यहां पर है. ये दोनों मान लीजिए एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं. ये डिस्टेंस गिवन है. तो मान लीजिए r डिस्टेंस पे है, और अब इसके बीच एक फोर्स इधर लगेगी और ये फोर्स इधर लगेगी. क्लियर? तो इसमें हमें क्या करना है? तो ये जो फोर्स अगर F लग रही तो F ये भी होगी, F ये भी होगी. नाउ तो सबसे पहले इसमें आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट 2 प्रोटॉन्स, ये सीख लीजिए न्यूमेरिकल कैसे आपको यूज करना है. 2 प्रोटॉन्स आर पुट at a distance r, at a distance r. Clear? Now charge on proton, charge on proton equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now mass of proton, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा. मास ऑफ प्रोटॉन, it is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. The value of g, it is equal to 9.81 meter per second square. Clear?
तो पहले तो जो गिवन है वो लिखा, इसके बाद वो कह रहे हैं कि इनके बीच कूलॉम अकॉर्डिंग टू कूलॉम फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फोर्स F will be equal to 1 upon 4 pi epsilon Fe into Q1 Q2 upon R square. Clear? Since charge on proton नाम ले लिया तो Q1 it is equal to Q2 equal to this one, क्योंकि ये इक्वल है, पहले दो प्रोटॉन बोल रखे, डिस्टेंस आपने R एज्यूम कर ली. नाउ अकॉर्डिंग टू question the force between them equal to weights of either, weight of proton, तो Fe will be equal to mp into g. mp means this one, mass of mp. Clear? Therefore now put the value, now 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 वैल्यू पुट कर दीजिए. Q1 means 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19 upon R square equal to m means 1.67 into 10 to the power minus 27 into 9.81. Clear? You have to calculate the value of R. Therefore, R square, put up the value of this one. R square equal to, R को इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये लिख सकते हैं 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 38, ऊपर की वैल्यू हो गई, into, नहीं बस, इसके बाद ये नीचे आ जाएगा 1.67 into 10 to the power minus 27 into 9.8, 81 की जगह 8 कर दीजिए. एंड अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, अगर इसकी जगह वैल्यू यहाँ रख देते तो कितना होता है 9 into 10 to the power 9. देयरफॉर ये कहाँ जाएगा, इसी के ऊपर, तो जाएगा 9 into 10 to the power 9. क्लियर? नाउ सॉल्व इट. तो अगर देखें, अब यहां पर बच्चों याद रखने एक अप्रोक्सीमेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकल के आ जाता है. वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन आएगा उतने. कैसे? जैसे इसमें देखिए यहां पर एक स्क्वायरिंग दी हुई है, तो ऊपर तो कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है लेकिन नीचे कंप्लीट स्क्वायर नहीं है. इसके लिए हमें क्या करना है, तो अब इसमें अगर स्क्वायरिंग ले पहले तो पावर को इक्वल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1.6 होल स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर, ये आपका ऊपर जाएगा 27, यहां जाएगा प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 936, तो ये हो जाएगा -36 प्लस 9 प्लस 27, देन इट इज कैंसिल आउट ऊपर का, और नीचे बचेगा 1.67 इंटू 9.8. क्लियर? अब इसमें और कैलकुलेट करने के लिए अब इसको कैलकुलेट करिए, तो ये तो पूरी कैंसिल हो गई, 0 हो गई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1.6 इंटू 3 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर 10 ले लें तो ये आ जाएगा 16.7 है, तो अप्रोक्सीमेट 16 आएगा. अप्रोक्सीमेट, अब यहां अप्रोक्सीमेट हो गया, लाइक दिस वन. अब इसको जब सॉल्व करें, यहां से ले आइए और यहां सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 1.6 इंटू 3 अपॉन 4 से ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.4, देन इक्वल टू 1.2 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर. तो पावर में नहीं मिस्टेक हो रही है, 29, 36, 4, 1.2 मीटर जो हो सकता है इसे आंसर, लेकिन ये कैसा हुआ, अप्रोक्सीमेट. ये साइन यूज करते हैं फॉर अप्रोक्सीमेशन, ऑलवेज रिमेंबर
कोई जरूरी नहीं है, approximation like this one. Clear? In this way you can solve this problem. अगर इसके अलावा यदि एक और हो जाएगी, हो गया कितना हुआ? 20 है 20 हो गए। अभी नेक्स्ट टाइम है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊंगा, क्योंकि बच्चों ज़्यादा लंबा हम अपलोड नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी फिर अभी बताऊंगा। चलिए।